Hello everyone, welcome back to Learning Himachal. Welcome back to the वनपथ. कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो. So today we are going to do MCQs of physical geography. So without further ado, let's get started. Question number one: which of the following statements are true with reference to corals? First is expulsion of zooxanthellae by the coral leads to immediate death of corals. Statement 2: extreme low tides help in reversing the effect of coral bleaching. And statement 3: cryomesh technology helps to store coral larvae. Select the correct answer using the code given below. ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं. हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है. ठीक है. तो पहली स्टेटमेंट अगर देखें तो एक्सपेल्शन ऑफ zooxanthellae जो है वो इमीडिएट डेथ का रीजन नहीं होता है. एक्सपल्शन ऑफ zooxanthellae लीड्स टू ब्लीचिंग ऑफ कोरल. ठीक है. कोरल का कलर चला जाता है, कोरल टर्न्स वाइट. ऐसे कोरल्स आर वेरी कलरफुल इन नेचर, बट अगर zooxanthellae चली जाए, जो एल्गी है वो चली जाए, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, ब्लीचिंग, एंड दैट टर्न्स कोरल वाइट इन कलर. ठीक है. तो स्टेटमेंट वन जो है दैट इज नॉट करेक्ट. तो स्टेटमेंट वन को अगर हम एलिमिनेट करें तो हम अपने आंसर तक पहुंच रहे हैं. हमारा आंसर है ऑप्शन बी, थ्री ओनली. बट हम दूसरे ऑप्शंस भी देखेंगे. दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है? एक्सट्रीम लो टाइड्स हेल्प इन रिवर्सिंग द इफेक्ट ऑफ कोरल ब्लीचिंग. तो जो लो टाइड्स हैं वो रिवर्स नहीं करती हैं कोरल ब्लीचिंग, वो कोरल ब्लीचिंग का एक रीजन बन जाती हैं, रिवर्स नहीं करती हैं कोरल ब्लीचिंग के इफेक्ट को. एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज क्रायोमेश टेक्नोलॉजी helps to store coral larvae, तो ये एकदम करेक्ट है. तो हमारा आंसर क्या बन गया, थ्री ओनली. लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट. सेम एक्सप्लेनेशन में आपको वही देखने को मिलेगा. कोरल के बारे में बताया, कोरल मेक अप सम ऑफ द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड. कोरल एंड एल्गी डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव. कोरल हैव symbiotic relationship with microscopic algae called zooxanthellae. These algae are the coral's primary food source and give them their color. तो statement one is not correct. Why? Same reason. क्यों? क्योंकि कोरल जो है वो white completely turns white अगर zooxanthellae को छोड़ दे. ठीक है. It is called coral bleaching. When coral bleaches, it is not dead. ठीक है. Coral can survive a bleaching event, but they are under more stress. ठीक है. Statement 2 is also not correct. Why? Because one of the leading causes of coral bleaching is climate change, which is warming the planet. However, coral bleaching may occur due to other reasons like extreme low tides and pollution. Therefore, extreme low tide exposure to the air during extreme low tides can cause bleaching in shallow corals. ठीक है. Statement 3 is correct. क्यों? क्योंकि cryomesh technology is a new method used for freezing and storing coral larvae. Cryogenically frozen corals can be stored and later introduced into the wild. Done? Question number 2. Consider the following rivers: Ib, Koel, Ong, Jira, Sita. Which of the rivers given above are not tributaries of Mahanadi River? इनमें से कौन सी महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज नहीं है? तो इब है, ओंग है, एंड जीरा है. तो हमारे पास कौन सी नहीं बचती? कोयल एंड सीता आर नॉट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी रिवर. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आंसर देख लेते हैं. ऑप्शन ए. Explanation about Mahanadi River. It originates from Amarkantak Hills. कहाँ से originate हो रही है? अमरकंटक हिल से, of Bastar Plateau near Farasia village in Raipur district of Chhattisgarh. The Mahanadi basin extends over states of Chhattisgarh and Odisha and comparatively smaller portion of Jharkhand, Maharashtra and Madhya Pradesh. The important tributaries of Mahanadi are Ib, Ong, Tel, Jira, Salki, Kunarnia, हरिहरजोड़, सागड़ा, रेत, हती, इंद्रा, सुक्तल, उतेम, उदांती, लांत, सपुआ, etc. Hence, option A is correct answer. Done? Let's move ahead. Question number 3. Consider the following statements with reference to hydrothermal vents. Statement 1. Water present in hydrothermal vents does not boil. Statement 2. Hydrothermal vents are formed due to percolation of seawater through fissures in the ocean crust near subduction zone.
Which one of the following is correct in respect of the above statement? Both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is correct explanation for statement 1. Both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Option C, statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Option D, statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. So, स्टेटमेंट वन क्या कह रही है कि वाटर जो है हाइड्रोथर्मल वेंट्स में बॉईल नहीं करता है, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में वाटर बॉईल नहीं करता है. एंड स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स कैसे बनते हैं. हाइड्रोथर्मल वेंट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू पर्कुलेशन ऑफ सी वाटर थ्रू फिशर्स इन द ओशन क्रस्ट नियर सबडक्शन जोन. ये भी सही है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स बनते ही ऐसे हैं. बट क्या स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन का एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि अगर वाटर बॉईल नहीं कर रहा है तो वो क्यों नहीं कर रहा है. स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है स्टेटमेंट वन को, तो वी विल गो विद ऑप्शन बी. बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन. देखते हैं आंसर. आंसर इज ऑप्शन बी. About hydrothermal vents, they are result of seawater percolating down through fissure in the ocean crust near spreading center on the subduction zone. The cold seawater is heated by hot magma and re-emerges to form the vents. Hence, statement 2 is correct. Statement hydrothermal vents आपके ऐसे ही बनते हैं. And scientists first discovered hydrothermal vents in 1977 while exploring an oceanic spreading ridge near the Galapagos Island. Seawater in hydrothermal vents may reach temperature of over 700 degree Fahrenheit. Hot seawater in hydrothermal vent does not boil because of external pressure. ये दिया रीजन, यहाँ पे ये आया एक्सप्लेनेशन जो कि क्या स्टेटमेंट टू ने नहीं दिया था स्टेटमेंट वन के रिगार्डिंग. ठीक है, at the depths where the vents are formed. Hence, statement 1 is correct but is not correctly explained by statement 2. And इसी तरह हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर बन जाता है. ठीक है, चलिए. Question number 4. The climate has features of both the maritime and continental climates. It is not observed in southern hemisphere. The climate has cold, dry winters and warm, wet summers. The predominant vegetation of this climate is cool, temperate forest. Which of the following climates best suit the description given in the passage? तो ये जो फीचर्स हैं आपके कौन कौन से. Your the climate has cold, dry winters. वार्म वेट समर्स होंगे. ठीक है, नॉट ऑब्जर्व्ड इन सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा. प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन है कूल टेम्परेट फॉरेस्ट की. ठीक है, और दोनों मेरीटाइम और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के फीचर्स हैं. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. सी, आंसर इज बी, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. जो चीजें हमने पीछे पढ़ी वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखी गई हैं. Let's move ahead. Question number 5. Consider the following statements. Statement 1. Earth turns counterclockwise when viewed from polar star. Statement 2. Northern hemisphere winters are generally milder than southern hemisphere winters. Statement 3. Change in seasons is mainly caused by rotation of the earth. How many of the statements given above are correct? इनमें से दो ही statements correct हैं. First one is your statement 1. Statement 1 is correct. अर्थ जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज टर्न करती हुई ही दिखाई देती है जब आप पोलर स्टार से देखते हो. एंड सेकंड स्टेटमेंट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के विंटर्स जो है वो माइल्ड होते हैं कंपैरेटिव टू सदर्न हेमिस्फीयर के विंटर्स. ऑप्शन 3 इज नॉट करेक्ट. कैसे? ऑप्शन 3 में जो बोला गया है कि चेंज इन सीजन्स जो है वो किसकी वजह से है, वो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, तो ये गलत है. चेंज इन सीजन किसकी वजह से होता है? अर्थ के टिल्ट की वजह से. बट एक बार हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है इस बात की. ऑप्शन बी, only two statements are correct. कौन-कौन सी statement correct है? Statement 1 is correct. Earth's rotation is the rotation of solid Earth around its own axis. The Earth rotates from west to east as viewed from North Star or Pole Star. The Earth turns anti-clockwise or counter-clockwise. Statement 2 is also correct. In Northern Hemisphere winters
and southern hemisphere summer tend to be milder than southern hemisphere winters या फिर northern hemisphere summer. क्यों होता है ऐसा? It is due to the distance between perihelion and ephelion, which is around 10 million kilometers. एपीहीलियन और पेरीहीलियन आप लोगों को पता ही है क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं पता आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि चेंज इन सीजन अर्थ के टिल्ट की वजह से होता है। अर्थ जो अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है और 66.5 डिग्री का जो एंगल बना रही है उसकी वजह से सीजन में चेंज आता है, ठीक है। When the northern end of Earth's axis is tilted toward the sun, the most direct rays of the sunlight fall in northern hemisphere. This causes its summer season. At the same time, the southern hemisphere experiences winter since it is receiving indirect rays. ठीक है? So that's it for the day. अगर आप HPFS की प्रिपरेशन को A to Z एक्सटेंसिवली करना चाहते हो तो लर्निंग हिमाचल इज देयर टू हेल्प यू। एंड अगर आप अपनी प्रिपरेशन को का लेवल टेस्ट करना चाहते हो तो वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग मॉक टेस्ट फॉर यू। फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी you can contact our team, and if you directly want to join these initiatives you can check the description of this video. So keep studying, keep working hard. Thank you and have a nice day.